Hello students, let's move on to our next topic, which is finding magnetic induction at an axial point of a circular loop which is carrying a current. Okay, so you can see the diagram over here. What is to be noted over here is we are going to find magnetic induction at an axial point. Now, what is the meaning of axial point? See, this is that circular loop which is carrying current. Okay, let us consider the current is in anti-clockwise direction. This is current. Now, this will be called as an axis of that circular loop. We have to find magnetic induction at this point, called as an axial point. Along the axis, there is one point where we are supposed to find magnetic induction. So far, we were finding at the center. Okay, maybe it could be a circular loop or it could be an arc. Understood? The derivation part. Our last answer that will come is this: mu naught I r square. R square, r is the radius. 2 z square. Z is the distance of that point from the center of the loop. Okay, plus r square whole raised to 3 by 2. Obviously, we are going to use again the same part, which is nothing but the Biot-Savart's law. So for applying Biot-Savart's law, we know we are supposed to write dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sine theta upon r square. Now let me define the r. So r is nothing but this distance. Okay, r is nothing but the distance between the small element dl and the point. Okay, so we are going to consider the small element dl over here. This is the small element dl and this is that distance r. Got this? Now the next part is to find angle theta. Okay, just observe this loop is in xy plane. I hope you understand. In this plane, horizontal plane. Check करो. इधर y axis लिखा हुआ है. Okay, and here it is x axis. Correct? So it is in horizontal plane. Whereas this point is not in horizontal plane. It is in vertical plane. So R is in vertical plane. I can say YZ plane. Okay. Whereas this is in XY plane. So horizontal plane, vertical plane. उन दोनों के बीच में angle कितना बन जाएगा? Obviously 90 degree. So here I am going to write, but sine 90 will be equal to 1. Sin theta, that is sin 90, will be equal to 1. So our dB will become as mu naught upon 4 pi I dl upon r square. I hope so far it is clear. Next part we need to understand is what is the direction of dB. Okay, what is the direction of dB? So I'll take you to the concept of what I can say scalars and vectors. In scalars and vectors, if I had written P cross Q, P cross Q लिखा है, and this is equal to R. Okay, so in this direction of R is always perpendicular to P and Q. अब वो कैसे याद करो? Let us consider this is your P vector. Okay, this is your Q vector. ठीक है? तो R का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड पाम रूल से ही फाइंड करते थे. First, we should keep our hands, that is the palm, in the direction of first vector. P के डायरेक्शन में रखना है and then उसको दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में घुमाना है. करेक्ट और नॉट? So that is how you get the direction of R. ये जो थंब रहता है वो किसका डायरेक्शन देता है? R का. फाइनल आंसर का. So I repeat, P cross Q. So that is the direction of R. So what you understand, R का डायरेक्शन बाहर की तरफ है. तो बाहर तो मैं शो नहीं कर सकता, ऐसा समझो ये बाहर की तरफ है. This is the direction of R. So इससे क्या सीखा? Conclusion ये है, when there is a vector product of two quantities, okay, तो उसका जो final answer है, that will be perpendicular to these two quantities. P and Q को R perpendicular रहेगा. अब यहाँ पर भी अगर आपको vector product याद हो, now let me rub this.
if you remember the vector sign of this magnitude induction, vector form में भी हमने लिखा था. It was something like this: dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl cross r divided by r cube. I hope you remember this. Okay. So what does this suggest? dl and r ये p and q के जैसा है. Understood? इनका जो आंसर है वो क्या है? dB. ओके, ये आर के जैसा है, कैपिटल आर. जस्ट नाउ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ पी क्यू आर. पी क्यू एंड दिस इज आर. समझ में आया? तो कंक्लूजन क्या है कि डीबी का डायरेक्शन इसमें इन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा. ओके, सो दैट इज हाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज I am going to show the direction of dB right now. Okay, so direction of dB is something like this. ये हुआ dB का डायरेक्शन, इन दोनों को परपेंडिकुलर है. देखो यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है. Got this? Okay. Now let us denote the angle over here as alpha. Okay, angle alpha ये 90 डिग्री है. So हमारा पाइथागोरस ट्रायंगल बन रहा है इधर. Okay, so I need to find cos alpha. Cos alpha फाइंड कर लेते हैं. So I will write cos alpha is equal to, ये ट्रायंगल में देखो adjacent alpha का क्या है? कैपिटल R and hypotenuse क्या है? स्मॉल r. Got this? One more thing, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो. Okay, so I can write r square is equal to capital R square plus z square. So I hope small r square root ले लो क्या? So this will be written as r square plus z square. Got this? So यही वैल्यू मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. So my next part will be capital R upon r square plus z square. Got this? So we are coming till this part. Now next part is resolving. किसको resolve करना है? Resolve इसको करना है. Okay? By geometry, I can tell you that here the angle made with the vertical by dB is going to be equal to theta. Sorry, alpha. Okay, let's resolve this. So एक resolution इधर आएगा and दूसरा resolution इधर आएगा. I hope you know that. Resolve करने का तो एकदम easy हो गया आपके लिए. एक sin component, दूसरा cos component. But cos component किसको देते हैं? जो लाइन के साथ एंगल बने. So what I told you, vertical के साथ ये एंगल है आपका अल्फा. Okay, now you must be wondering कैसे अल्फा आ गया? By geometry I can prove कि ये एंगल और ये एंगल सेम है. I'll come to that part, but as of now आप सिर्फ assume करो कि ये अल्फा है. Okay, we will prove that later on. Now अभी अल्फा एंगल मिल गया तो बहुत सिंपल है. अब इसको मैं लिख सकता हूँ dB cos अल्फा. ओके, एंड ये हो जाएगा आपका dB sin अल्फा. आई होप दिस मच इज क्लियर. सो हमने रिजॉल्व कर दिया. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट कम्स कि ये तो सिर्फ इसका आया, एक एलिमेंट का dB का डायरेक्शन ड्रॉ किया एंड उन दोनों को रिजॉल्व किया. अब समझ लो इधर एक और एलिमेंट होता तो आप इधर भी r ड्रॉ करते थे. ओके, देन उसका भी एक dB आता था which would be on this side. I hope you understand. I repeat this. dl इधर आप r ड्रॉ करते थे, फिर उसका भी dB का डायरेक्शन ऐसा आता था, फिर उसको भी आप रिजॉल्व करते थे. उसका एक dB cos अल्फा ऊपर आएगा और dB sin अल्फा लेफ्ट साइड आएगा, बिकॉज इस बार dB का डायरेक्शन इसका पूरा ऑपोजिट है. यहाँ पर राइट साइड में है तो इधर लेफ्ट साइड में होगा. ओके, सो dB sin अल्फा, dB cos अल्फा. So what is the conclusion? dB sin alpha will get cancelled out. I hope you understand this. एक और dB sin alpha यहाँ पर होगा लेफ्ट में और एक राइट में होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. ओके, बट dB cos alpha they both are pointing in upward direction. वो कभी कैंसिल नहीं होगा. ये तो हमने सिर्फ what we can say we had considered for this all topics like DL. ठीक है, दो DL की वजह से ये कंसीडर किया था. Got this? So that is how sin alpha का component आएगा नहीं, इतना याद रखो. We will require which component? That is cos alpha. Okay, and hence now you can understand कि मैंने cos alpha find क्यों किया है. Okay,
So let's now proceed with our derivation. B will be written as what? Integration of dB cos alpha. सारे dB cos alpha को हम इंटीग्रेट कर देंगे. ओके, सो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? dB के बदले ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग. So this will be written as mu naught upon 4 pi I dl upon r square into cos alpha. I hope this till this part everything is clear. Okay. Now cos alpha का वैल्यू इधर से सब्स्टिट्यूट करो, r square का वैल्यू इधर से सब्स्टिट्यूट करो. Let's solve this further. So our next step will be mu naught upon 4 pi. Okay. I upon this will be written as r square plus z square. Okay. Then cos alpha के बदले लिखेंगे into r upon square root of r square plus z square and then dl. Got this? Now you know integration किसका possible है? dl का. Okay, dl integrate होगा, ये सारे dl को join करेंगे हम लोग. Okay, so my next step will be mu naught upon 4 pi I r. Just observe this part. We have already covered it in one of the derivation. इसका power 1 है and इसका power half है. So ये 1 plus half that will give you 3 by 2. Okay. So लिख सकते हैं हम लोग r square plus z square whole raised to 3 by 2 and then integration of dl. Integration of dl. अब integration of dl आप समझ जाओ. ये सारे dl को join करना है. And that will give you nothing but the circumference. Correct? पूरा circle मिल जाएगा. So the answer of integration of dl will be what? 2 pi r. So my next step will be this is equal to mu naught upon 4 pi I r upon r square plus z square whole raised to 3 by 2 into here I will write 2 pi r. Got this? Let's see what all things can get cancelled. Pi cancel हुआ, 2 ones are 2 twos are. Okay, so our last answer I hope it will be mu naught, then we have I r into r square. Okay, and this divided by 2 which is present over here, then r square plus z square whole raised to 3 by 2. I hope this answer matches with the starting part that I told you. Correct? So this is the magnetic induction at an axial point. Okay, axial point due to circular loop carrying a current. Is it clear? Fine. Now one part is pending that I am supposed to tell you कि ये angle alpha कैसे आए. So try to understand. Now diagram will get complicated. Okay, because the derivation is completed. Okay, just I want to prove that this angle is alpha. Okay, so there is no need of diagram as of now to be presented well. Okay, so just have a look at this derivation, then I'll just explain you in the diagram. So देखो, अगर ये अल्फा है, ये 90 है, so I hope this angle I can write as 90 minus alpha. Okay, 180 टोटल है, उसमें से 90 गया, तो ये 90 माइनस अल्फा. अब ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, उसमें से अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये डेफिनेटली अल्फा होना चाहिए. आप चाहो तो इसको ऐड करके देखो, 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा विल गिव यू 90. क्लियर विद दिस? हमको ये नहीं पता ये एंगल कौन सा है, ठीक है, फिलहाल नहीं पता है हमको. नाउ टेक नेक्स्ट एग्जांपल. चेक दिस पार्ट, दिस ये भी 90 डिग्री है, चेक करो, दिस इज आल्सो 90 डिग्री. क्लियर और नॉट? सो अगर इसमें ये एंगल अल्फा है, ये अल्फा है, और ये अगर 90 है तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस अल्फा. सिमिलरली अब इधर आ जाओ, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है. ओके, सो ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो ये क्या होना चाहिए? अल्फा. सो इट इज क्वाइट सिंपल.
ऑलमोस्ट सारे एंगल्स 90 डिग्री के आसपास मिल रहे हैं, उसमें एक पार्ट अल्फा है तो अपने आप दूसरा पार्ट 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और अगर एक पार्ट 90 माइनस अल्फा है तो अपने आप दूसरा पार्ट अल्फा हो जाएगा. दैट सिंपल इट इज. आई रिपीट दिस, 90 अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा. नाउ सिंस दिस होल थिंग इज 90, दिस इज 90 माइनस अल्फा, दिस विल गिव यू अल्फा. अब ये पूरा 90 है, BB से लेकर ये लाइन DL तक, तो ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया. ये 90 डिग्री पूरा है दिस वे, राइट एंगल, तो इफ दिस इज 90 माइनस अल्फा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री अल्फा हो जाता है. सो दैट इज हाउ वी कैन प्रूव बाय ज्योमेट्री दैट एंगल इज अल्फा. ओके, दैट्स इट फॉर दिस डेरिवेशन. So students, we will again derive the magnetic induction at the center of this circular loop if the point was at center. हम ये तीसरी बार कर रहे हैं. Okay, and this time also we will come at the same answer which we had done at the starting part of Biot-Savart's law. So this is how, like, these are all general formulas. जैसे आपको यही बताना है कि general formulas है, इसमें अगर आप modification करोगे तो आपको वापस वही formula मिल जाएगा जो हम लोग एक अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं. Okay, so first let's understand this one is axial point, Z was the distance, correct or not. अब अगर मुझे मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पर फाइंड करने का है एट सेंटर, ओके, सो मेरा P पॉइंट सेंटर पे है, सो इन दैट केस व्हाट क्या हुआ, Z का वैल्यू तो 0 हो गया, एग्रीड और नॉट, क्योंकि P पॉइंट तो इधर आ गया, Z तो अभी रहा ही नहीं है. तो ये फॉर्मूला अपना मॉडिफाई हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2, ये Z स्क्वायर तो निकल गया, so we are just left with R square whole raised to 3/2. So now this 2 gets cancelled, so mu naught I R square upon 2 R cube. तो ये R square है, इधर एक R बच गया, एक स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया, so we are left with mu naught I upon 2R. ये हो गया B at center. You can very well observe in our previous videos, हमने एक तो बायट-सैवर्ट्स लॉ सीखा था, उसके बाद तुरंत एक सर्कुलर लूप का ये एग्जांपल लिया था, ये आंसर आया था. हमने प्रीवियस लेक्चर में सर्कुलर आर्क पढ़ा था, ओके, एंड सर्कुलर आर्क को फिर हमने पूरा लूप कंसीडर किया, तो यही आंसर आया. एंड दिस टाइम ये फॉर्मूला को यूज करके भी यही आंसर आया. सो दिस ऑल आर जनरल फॉर्मूलाज which can be very well applied to circular loop to get the same